ओके, वेलकम बैक फ्रेंड्स। ठीक है, दिस इज लेक्चर 9 ऑफ ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट्स फॉर सीएमए इंटरमीडिएट जून 2022 अटेम्प्ट। ठीक है, अभी यहाँ से 9 ऑनवर्ड सारे लेक्चर्स प्राइवेट वीडियोस जाने वाले हैं। ठीक है, सो ओनली फॉर आवर स्टूडेंट्स, इट विल बी ओनली फॉर आवर स्टूडेंट्स। ठीक है, सो ये मैं क्विकली आपको बता देता हूँ किस तरह से वी आर गोइंग टू अप्रोच इट। ठीक है, टिल लेक्चर 8 okay, I had modified the notes and given it to you. Okay, but 9 onwards we'll be doing it directly from the study material because of want of time. Okay, so हम lecture 9 onwards हम study material से करेंगे directly और approach ये रहेगा। देखिए, okay, once every 3 days, ठीक है, I'll be dedicating 1 day fully for auditing. Okay, जैसे आज हम auditing करेंगे। Okay, today is second, third, fourth, fifth छोड़िए, next will be sixth. Okay, ऐसे करेंगे और that 1 day will cover sizable ground, काफी कुछ हम कवर करेंगे। Okay, so यहाँ पे और अप्रोच ये रहेगा कि एक one page of study material when I will take, ठीक है, फर्स्ट आई एक्सप्लेन इट टू यू कि उसमें क्या है, मेन पॉइंट क्या है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा एंड देन नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि उसमें से शॉर्ट में आपको कैसे लिखना है। ओके, हाउ यू शुड राइट इन शॉर्ट। जस्ट मेरे साथ साथ चलिए। एवरी 3 days 1 day विल बी डेडिकेटेड टू ऑडिटिंग। ठीक है, तो मैं चाहे तो मैं डेट्स भी रिलीज कर दूंगा, सो यू विल नो दैट these dates you will have auditing। that आज सेकेंड है, नेक्स्ट 6th में होगा, then 10th, okay, then 14th, okay, then 18th, okay, then maybe 21st वगैरह का आपका लास्ट लेक्चर होगा। ओके, ऑन ऑफ ऑडिटिंग। सो एंटायर कोर्स विल बी कवर्ड। ठीक है, आपको मैं दूसरी बात है कि शॉर्ट में कैसी चीजें लिखना है समझा भी दूंगा। when we go, अभी आज का लेक्चर आप देखोगे तो you will understand how this will go on, so you can just consider as a course plus revision। ठीक है, in a way you can write it in short। ठीक है, जैसे आप लिख सकते हो उस हिसाब से हम इसको भी करेंगे। ओके, विल बी अप्रोचिंग दिस। सो नाउ टुडे व्हाटएवर लेक्चर्स आई विल बी लोडिंग, ठीक है, यू विल हैव 3 days टू कंप्लीट इट। ठीक है, तो आप मेरे साथ साथ चलेंगे बिल्कुल। जस्ट सो टॉकिंग स्पेशली टू those who are waiting for me to complete audit। ठीक है, there might be some students who have already referred to some other videos and completed it, their case is different, but those who are depending on me fully, okay, for them, so every 3 days I'll be loading it। So today's lecture you will have 3 days, complete it nicely based on the lectures। ठीक है, okay, और I'll try to make it as simple as possible, पूरा examination oriented। okay, so every 3 days you should complete along with me। चलिए, so this is lecture 9 now। okay, I will take you to the study material। ठीक है, so last time we had completed till statutory audit। ठीक है, स्टैट्यूटरी ऑडिट हम लोगों ने किया था और यहाँ एडवांटेजेस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट से हमको कंटिन्यू करना था। ओके, सो आई विल क्विकली टेल यू व्हाट स्टैट्यूटरी ऑडिट इज। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑडिट, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, टू डिटरमाइन ट्रू एंड फेयर व्यू। ओके, ये पॉइंट आपको हमेशा जगह जगह पे लिखना है। wherever you know anything like a statutory audit or in any case, ठीक है, जहां भी ऑडिटिंग का रेफरेंस आता है, so you what you should mention is true and fair view of the state of affairs and of the performance। state of affairs means balance sheet, performance means profit and loss। okay, so now statutory audit जो है इसका नाम ही स्टैट्यूटरी है, मतलब स्टैट्यूट यानी लॉ से बना हुआ। wherever law is prescribing audit। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये शॉर्ट में बड़ा दिख रहा है, आपको क्या लिखना है मैं वो समझाता हूँ। ओके, so wherever law is prescribing audit, that is statutory audit। ठीक है, checking of accounts required by law। ठीक है, law में require, ठीक है, having audit। ठीक है, so annual audit or audit of financial records of a company or any other company, any other entity। ठीक है, यहाँ पे मेन क्या है, स्टैट्यूटरी ऑडिट में लॉ इज प्रिस्क्राइबिंग द ऑडिट, ये याद रखना है आपको, सिंपल चीज है। ठीक है, स्टैट्यूट का ऑडिट है, लॉ विल बी प्रिस्क्राइबिंग इट। ओके, इट कैन बी फॉर कंपनी और फॉर एनी अदर एंटिटी। ठीक है, ठीक है, कैसे, so if law is prescribing then law will give all details also, okay, how to conduct it and all that।
manner of reporting, how the report will be submitted. ठीक है? So to whom report has to be submitted. If it is statutory, then it will go to some statutory authority also. Okay? A copy will go to statutory authority. ठीक है? अब ये सारी चीजें इसमें रहेगी. ओके, सो मैनर ऑफ कंडक्टिंग द ऑडिट और कैसे कैसे आपको क्या करना है, ठीक है, एवरीथिंग विल बी देयर इन द स्टैट्यूट इटसेल्फ, लॉ में ही रहेगा. ओके, सो दे आर मैंडेटरी. एक और चीज है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑलवेज मैंडेटरी, करना ही होता है. ओके, ठीक है. एंड स्टैट्यूटरी ऑडिटर is the principal auditor of an organization. So top most auditor. So statutory auditor doesn't report to any other auditor like internal auditor, whatever appointed by the company. Okay, right? So even an investigator for that matter. Statutory auditor जो है वो किसी auditor के under नहीं होता. It's a top auditor. अब यहाँ पे बस इतना बताया गया कि what are the types of organizations which have to do statutory audit. ठीक है. For companies, it is as per Companies Act 2013. Okay, companies as per Companies Act 2013. If it is a government audit, okay, then it is as set by Controller and Auditor General of India, and little bit of Companies Act recommendations also work. Okay, and last is for any other organization which has been formed under a special act, that is insurance company, बैंक. ठीक है, दिस इज यहाँ पे ऑडिट कैसे होगा, एज पर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी और आरबीआई. ओके, ठीक है. और इन मेनी टाइम्स इट इज आल्सो यू आल्सो हैव टू फॉलो फॉर बैंक्स बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. ठीक है. सो कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए देयर इज, इट फॉलोज कोऑपरेटिव सोसाइटीज बैंक. ठीक है. इस तरह से all these now, all 1 2 3 all 3 are statutory audits because they are prescribed by the acts. ठीक है. तो क्या हमने देखा यहाँ पे, what is statutory audit. ठीक है. Okay, audit prescribed by statute, that is law. ठीक है. So everything, the manner of doing audit, manner of submission of report, to whom report is to be submitted, everything is given in law. ठीक है. Statutory auditor is the principal auditor. ठीक है. ये मेन पॉइंट्स आपको लिखने हैं. देन वेयर इज स्टैट्यूटरी ऑडिट एप्लीकेबल फॉर कंपनीज, कंपनीज एक्ट. ठीक है. एंड फॉर गवर्नमेंट बॉडी सीएजी या सीएजीआई भी बोलते हैं. ओके, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड कंपनीज एक्ट फॉर गवर्नमेंट बॉडी. और फॉर एनी institution under a special act, okay, that act, its insurance company will be IRDAI. Okay, ठीक है. and nationalized bank will be Reserve Bank of India. ठीक है, right, as per and also the acts, उनके जो acts है वो भी. okay, so and cooperative banks will be as per Cooperative Societies Act. ठीक है. बस ये 3 चीजें हैं. आपका हो गया. if any note is asked about statutory audit, it's more than enough. ठीक है, बिल्कुल more than enough है. और यहाँ पे भी Cooperative Societies Acts आपको even if here you don't write, it is enough. ठीक है. ओके, और अपॉइंटमेंट जो है इसका अपॉइंटेड बाय द बोर्ड और शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग. ठीक है. स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय बोर्ड और शेयर होल्डर्स इन द जनरल मीटिंग. ठीक है. और बोर्ड अपना शेयर होल्डर्स को ही अपॉइंट करना पड़ता है. ओके, इसमें दे कैन नॉट डेलीगेट दिस पावर टू डायरेक्टर्स. ठीक है, दिस हैज टू बी डन बाय शेयर होल्डर्स. ठीक है. बोर्ड का भी रिप्रेजेंटेशन विल बी देयर इन दैट मीटिंग, but it has to be appointed by shareholders. ठीक है. और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट स्टैट्यूटरी ऑडिट में याद रखना है कि इफ यहाँ पे जो है आपका, if shareholders fail to appoint auditor, then central government can appoint. So central government has the power. If shareholders fail to appoint, then central government can appoint. ठीक है. और क्वालिफिकेशन है CA with COP. okay, Chartered Accountant holding valid certificate of practice. CA with COP. ठीक है. So ये हो गया आपका. This is about statutory audits. This part although I had covered in the previous lecture, चलो मैं सोचा कि quickly ये दे दूं आपको. Okay. So now whatever we have spoken here, ठीक है, this should be enough for you. ये आप सुनोगे सिर्फ, you can easily write a short note of
4 मार्क्स ऑन स्टैट्यूटरी ऑडिट। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट। ठीक है, so first of all, what does the statutory auditor do? It audits and gives an independent opinion about the true and fair view। ठीक है, ये पॉइंट हो गया, ये लिख देना है। He'll do the audit and then he'll give his opinion as to the true and fair view of the state of affairs of the concern। ठीक है, okay, and that there is no misstatement or misrepresentation in the financial statement। ठीक है, बस हो गया, ये वाला पॉइंट खत्म हो गया। ओके, या इसमें तो कुछ याद करने की भी जरूरत नहीं आपको। Advantages of statutory audit, what you should first write is he expresses independent opinion as to the true and fair view of the state of affairs। ठीक है, and that there is no misstatement or misrepresentation। खत्म, okay, right? And statutory audit, okay, it increases the reliability, authenticity, etc. of the financial statements। okay, so क्योंकि independent authority has audited it, so it increases reliability and authenticity। ठीक है, and which may further be used by different users for purposes। ठीक है, so जो after ये है आपका points of advantages। ठीक है, so points में इसको इस तरह से advantages आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे that statutory audit increases reliability, authenticity, credibility of financial statements। ठीक है, and can be used by different users for purposes as। ठीक है, अब ये जो reliability, authenticity and credibility is increased, so इसका use, what is the various uses of this। ठीक है, वो हो जाएंगे आपके advantages। ठीक है, so one is shareholders for economic decisions and exercising their voting rights। ठीक है, okay, economic decisions क्यों? क्योंकि they will know now अब जो वैल्यू है आपके बैलेंस शीट का उस पर ठप्पा लग गया, करेक्ट, so they can easily take economic decisions based on that। ठीक है, now tax assessments can be done timely। tax authorities, after the audit is accounts are audited, tax authorities will easily accept it। ठीक है, तो ये है this is 2। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा है कि purchase and sale consideration। ठीक है, if you want to sell it, okay, और यहाँ पे पार्टनरशिप में एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर, एनी काइंड ऑफ सेटलमेंट, ओके, बिटवीन पार्टनर्स यू कैन यूज इट। ये क्या 4 पॉइंट हमने पढ़े एडवांटेजेस में। ठीक है, इट इंक्रीज रिलायबिलिटी, ऑथेंटिसिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, एंड दस हेल्प्स द यूजर्स फॉर, ये बोल के अब ये एडवांटेजेस आप लिखोगे। ठीक है, जो है आपके शेयर होल्डर्स फॉर इकोनॉमिक डिसीजंस एंड एक्सरसाइजिंग वोटिंग राइट्स। ठीक है, और टैक्स असेसमेंट्स फॉर परचेज एंड सेल कंसिडरेशन, डिटरमाइनिंग परचेज एंड सेल कंसिडरेशन, एंड फॉर पार्टनरशिप के लिए एनी सेटलमेंट लाइक एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ओके, तो सब में काम आएगा। ये 4 पॉइंट है। ठीक है, now it is can be used before court for disputes with employees, creditors, debtors। if there is any dispute, then audited accounts will help the company, it will be primary evidence। ठीक है, so dispute settling में भी ये काम आएगा। तो ये सब ये मेन पॉइंट हो गया, आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, ये 5 पॉइंट जो है वेरी वेरी सिंपल एडवांटेजेस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट। आप ये इतना ये नहीं लिखना चाहते ना, आप डायरेक्टली यू कैन राइट द पॉइंट्स आल्सो। ओके, सो में कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, एंड फिर है रियल एक्चुअल वैल्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, डिटरमाइनिंग एक्चुअल वैल्यू ऑफ बिजनेस और शेयर्स। ठीक है, फॉर मर्जर एक्विजिशन वगैरह, दैट इट हेल्प्स, स्टैट्यूटरी ऑडिट हेल्प्स इन दैट आल्सो। ठीक है, financial assistance from financial institutions, okay, they will give you easily if you have got a audited statement। ठीक है, for non profit organizations getting government grants, छोटे छोटे पॉइंट्स है सब। ठीक है, आपको इसमें से you can hardly get a 4 marks questions of advantages, 4 marks। ठीक है, so आप आराम से even if you write, if you can write 8 points, तो बहुत ही बड़े, छोटे छोटे 8 points अगर लिख देंगे, even small points will carry value। ठीक है, writing bigger points you can even write 4 points। ठीक है, small points से हम लोग देख रहे हैं अभी,
small points, if you write 8 points, easily you'll get the full marks. Okay. Then evaluation of internal control systems, okay, is on strengthening it by removing weaknesses. Okay. So strengthening the internal control system. Okay. If there are lots of errors in financial statements, you will know that, okay, internal control has to be controlled now. Okay. It is not doing its work. Okay. And checking integrity of the management. Is the management handling all funds properly or not? Okay. Okay. For now, दूसरा point है from the point of view of creditors, investors, government. ठीक है, इससे पता चलता है कि everything or assets are properly stated, neither overstated nor understated. ठीक है, ये पता, this is what they come to know. ठीक है, so and proper distribution of profits by way of payment of wages, bonus, etc. ठीक है, उसके लिए everyone gets the correct position. ठीक है, ये सब है आपको 13 पॉइंट्स है, और भी 2-3 पॉइंट्स है. ठीक है, आपको इतने डिटेल में सब जाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट है कि इंश्योरेंस क्लेम्स. ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम्स में काम आता है. ओके, राइट. तो दिस इज आल्सो गुड पॉइंट्स. इतने पॉइंट्स में से एनी 8 शॉर्ट पॉइंट्स को आप ले लो. ठीक है, राइट इट एज एडवांटेजेस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट. ठीक है, ओके. ये हो गया हमारा स्टैट्यूटरी ऑडिट. सभी आपको बहुत सारे टाइप्स ऑफ ऑडिट उनको एक एक करके देखने हैं. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑडिट. ठीक है, सो एक तो है यहाँ पे डेफिनेशन. ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको ऐसे कैसे रटने की जरूरत नहीं है. ठीक है, यू कैन जस्ट कोट सम एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट. ठीक है, यू डोंट हैव टू लर्न इट फुल्ली. ये है यूएन हैंडबुक ऑन गवर्नमेंट ऑडिटिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज. ठीक है, यूएन हैंडबुक ऑन गवर्नमेंट ऑडिटिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज ने ये बोला है. ठीक है, दैट गवर्नमेंट ऑडिटिंग को इट हैज डिफाइंड इट. ठीक है, दैट इट इज द ऑब्जेक्टिव सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर ऑपरेशंस ऑफ अ पब्लिक एंटिटी. ठीक है, ऑपरेशंस ऑफ अ पब्लिक एंटिटी. ठीक है, वो ऑडिट कर रहे हैं, दैट्स ऑल. ठीक है, उतना ही मेन आपको लिखना है. व्हाई यू आर ऑडिटिंग इट? फॉर इवैल्यूएटिंग एंड वेरीफाइंग देम. ठीक है, and then audit में what happens, end result is presenting a report containing comments, conclusions, etc. ठीक है, and whatever is your professional opinion on the financial statements. इसमें कुछ नया नहीं है. सच आप देखोगे ना, you'll have to, इसको अगर आ भी गया आपको शॉर्ट में, आपको फर्स्ट if you want to write something about government audit, ठीक है, से शॉर्ट नोट है. ये सब छोटी छोटी चीजें हैं. शॉर्ट नोट की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है. ओके, chances of short notes are very high in this. ठीक है, फर्स्ट व्हाट इज गवर्नमेंट ऑडिट. तो आपको यू डोंट इवन नीड टू इसको कोट करने की भी जरूरत नहीं है. ठीक है, याद रहे तो वेरी गुड. यूएन हैंडबुक ऑन गवर्नमेंट ऑडिटिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज. नाउ इंडिया इज आल्सो डेवलपिंग कंट्री. ठीक है, सिर्फ एज पर करके इफ यू कैन, आपको याद रहे तो बहुत अच्छा. अदरवाइज जस्ट राइट डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑडिटिंग इज. ठीक है, objective, systematic and independent examination of financial administrative operations of public entity. ठीक है, for evaluating, verifying them and presenting a report. ठीक है, just presenting an audit report and expressing professional opinion on the financial statements. खत्म, बस इतने ही पॉइंट्स. whatever I underline, उतने ही पॉइंट्स आपको you have to highlight it. ठीक है, ठीक है. if you can remember this then write it, नहीं तो छोड़ो, कोई प्रॉब्लम. ओके, name of this authority. Okay, now authorization is who is the top authority for government audit? Comptroller and Auditor General of India. ठीक है, CAG, Comptroller and Auditor General of India. स्पेलिंग देख लेना. ओके, कंट्रोलर नहीं, इट्स नॉट कंट्रोलर, दिस इज कंट्रोलर. ओके, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. ओके, तो ये चीजें सब आती है, तो यू हैव टू राइट द करेक्ट स्पेलिंग्स ऑफ द मेन बॉडीज. ओके, ठीक है, ये है द टॉप ऑडिट इंस्टीट्यूशन इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. ठीक है, ओके. तो गवर्नमेंट ऑडिट कैसा होता है? ठीक है, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट है. वन इज ट्रांजैक्शन ऑडिट. नॉर्मली ट्रांजैक्शन, व्हाट कैन बी गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन? आइदर इट विल हैव सम रिसीट्स, कुछ टैक्स वैक्स कलेक्ट होगा, एंड देन इट विल स्पेंड फॉर पब्लिक पर्पस. करेक्ट, सो यू विल हैव ओनली एक्सपेंडिचर ऑडिट एंड रिसीट ऑडिट अंडर ट्रांजैक्शन ऑडिट. इस ऑडिट में पर्पस इज टू सी
whether receipts have been properly written and expenditures have been, you know, you have expended with some authority. ठीक है, ओके, कि अपने मन से किसी ने एक्सपेंडिचर ना कर दिया. ओके, दिस प्रॉपर अथॉरिटी दैट इज टू बी सीन इन ट्रांजैक्शन ऑडिट. ठीक है. सेकेंड इज एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट. ठीक है. तो क्या ये ट्रांजैक्शन ऑडिट जो है, ये नहीं देखेगा कि हाउ एफिशिएंट यू आर. इट विल नॉट सी whether you are very efficient. ठीक है. It will only see that the money you have got, ठीक है, it is properly आपके खजाने में गया है. The money has been properly deposited, okay, wherever it should be deposited, and when expenditure was done, it was done with an authority to expend. ठीक है. It will not see whether the authority which was received, ठीक है, वो सही है कि गलत है, वो इसका काम नहीं है. Transaction audit, it will only see that receipt is properly deposited, payment is done with an authority. Okay. Now efficiency comes under efficiency come performance audit. This shows that, okay, all the amount which has been collected, it is being used prudently. Okay, ये इसका ये रहता है. ठीक है. तो यहाँ पे okay, first of all basic standards are set for audit of expenditure. ठीक है. Okay, and these standards ensure that there is provision of funds authorized by competent authority. ठीक है. So जो standard for audit of expenditure है, इसमें what is seen is, ठीक है, the funds which are authorized by the competent authority. ठीक है. Okay, for that are there any limits fixed? Are there any limits within which expenditure has to be incurred? ठीक है. So for example, जैसे मान लीजिए if ये पूरा आपको this much money has been given, ठीक है, for 3 purposes और अंदर, ठीक है, so now this has been utilized fully, so इसको exceed नहीं किया उन्होंने. ठीक है. They have not exceeded, they have utilized it properly, but internally it was said that this much money should be used for this purpose and this much money should be used for another purpose, but actually they have what they have done is they have done 50-50. ठीक है. तो ये सब चीजें जो है ना, दिस विल कम अंडर एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट. ठीक है. ओके. तो ये जो ऑडिट करते हैं, इट्स बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड सेट फॉर ऑडिट. ठीक है. ये जो ऑडिट है, सॉरी एक मिनट, ये जो है ये इसके साथ लिखा हुआ है, लेकिन ये अलग है. ठीक है. ये हम बाद में देखेंगे. जो मैंने जो आपको एफिशिएंसी का जो ये बताया है ना, द एक्सप्लेनेशन विच आई हैव गिवन यू, ओके, दैट इज करेक्ट, बट ये जो पार्ट है एफिशिएंसी विल कम नेक्स्ट. तो ये जो पार्ट है ना, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपेंडिचर ऑडिट यहाँ पे. ठीक है. जो पहला वाला है ना, इसकी बात कर रहे हैं. ठीक है. एफिशिएंसी विल कम नेक्स्ट. ठीक है. तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमने बता दिया. ओके, दीज आर द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट्स. ठीक है. Now first we'll start with expenditure audit. ठीक है. Now expenditure audit में क्या होगा? ठीक है. Standards will be set for expenditure. ठीक है. Standards will be set for expenditure कि आप कितना expenditure आप कर सकते हो करके. ओके. Standards will be set. ठीक है. And funds will be authorized by the competent authority always. ठीक है. Okay. Fixing the limits within which the expenditure can be incurred. ठीक है. So यहाँ पे जो standards will be set, okay, that standards will prescribe the limits within which the expenditure can be incurred. ठीक है. So इसमें से कुछ standards हम देख रहे हैं for expenditure audit. ठीक है. One is audit against rules and orders. ठीक है. तो ये अगर so इसमें audit against rules and orders, it is also called as regularity audit. ठीक है. ठीक है. Rules के साथ regular आता है, right? You can kind of इसको आप ये कर सकते हो. ओके. रेगुलर, राइट, एंड रूल. ठीक है. सो याद रखने के लिए. ओके. सो ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स मींस इफ देयर इज, यहाँ पे क्या रहेगा, अगर इफ द फॉर द एक्सपेंडिचर देयर आर एनी रूल्स ऑलरेडी देयर. ठीक है. गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं ना, एनी ऑल एक्ट हैव रूल्स, करेक्ट. इफ देयर आर रूल्स एंड स्पेसिफिक ऑर्डर्स, देन मेक श्योर दैट expenditure is within the rules and orders. बस simple चीज. ठीक है. The rules and orders, make it within rules and orders. ठीक है.
दूसरा है सैंक्शन, ठीक है। कुछ एक्सपेंडिचर जो होता है, ठीक है, यू नीड सम सैंक्शन, ठीक है, विदाउट सैंक्शन यू कैन नॉट डू दैट एक्सपेंडिचर, ठीक है। सो इफ यू नीड एनी जनरल और स्पेशल सैंक्शन, ठीक है, बाय एनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वेरेवर दिस इज नीडेड, ठीक है, तो आपको यू हैव टू डू इट ओनली एज पर सैंक्शन, एंड इफ यू एक्सीड द सैंक्शन लिमिट देन ऑब्जेक्शन हैज टू बी रेज्ड बाय द ऑडिटर, ठीक है। तो ये हो गया सैंक्शन, अमाउंट सैंक्शनड। पहली बात है सैंक्शन मिलने तक यू कैन नॉट एक्सपेंड टिल यू गेट सैंक्शन, एंड इफ यू हैव एक्सीडेड ऑडिटर हैज टू रिपोर्ट। तो यहाँ पे ये अंदर की चीज वगैरह आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। जस्ट रिमेंबर ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स इज कॉल्ड एज रेगुलरिटी ऑडिट, ठीक है, ओके। इसको बस इस पॉइंट पे याद रखना है, अदरवाइज ये है या रूल्स एंड ऑर्डर्स विल प्रिस्क्राइब, हियर सैंक्शन विल प्रिस्क्राइब, any government entity will sanction it, only based on that sanction they can do it, ठीक है। थर्ड इज अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड्स। यहाँ पे जो है your expenditure has to be done from specific provision provided funds। यहाँ पे the expenditure provision of funds means, ठीक है, expenditure is to be done for specific from specific provided funds, ठीक है। अब दूसरे कोई अमाउंट फंड से आप एक्सपेंड नहीं कर सकते इस केस में, ठीक है। सो इन दिस पार्ट दैट इज वो देखते हैं कि ऑडिट इज डन अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड्स और नॉट, ठीक है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल प्रोप्राइटी। प्रोप्राइटी यानी सही ढंग से काम हुआ है कि नहीं, ठीक है, जो काम यानी जिस पर्पस के लिए दिया गया है, इन ऑल स्पिरिट हैज इट बीन डन प्रॉपरली और नॉट। प्रोप्राइटी बस वही बोलता है, ठीक है। सो प्रोप्राइटी में क्या क्या है, recognized standards of financial propriety are quantity, quality, that is correct quantity, correct quality में काम हुआ है कि नहीं, morality and ethics, ठीक है। So whether you know all the work has been done on a in a proper way, in correct quality, quantity, morality and ethics, ठीक है। ये आता है आपका financial propriety, ठीक है। So these are the standards for expenditure audit. They ask you what are the standards for expenditure audit, ये चार चीजें आपको लिखना है। इसमें मेन दिस जो हेडिंग है ना, whatever is there in bold, so that is important, ठीक है। ये डाल दिया आपने तो आगे का आप लिख सकते हैं, ओके, ठीक है। सो ये हो गया हमारा एक्सपेंडिचर ऑडिट, ओके। चलो अब इतने में एक ये कर लेते हैं, विल डू वन डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइवेट एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट, ठीक है। प्राइवेट ऑडिट इज आल्सो कॉल्ड एज वॉलंटरी ऑडिट, खुद से कर रहे हैं हम, ओके, वी आर डूइंग इट बाय आवरसेल्व्स। स्टैट्यूटरी इज मैंडेटरी ऑडिट, ओके। तो इसमें क्या है, चार बहुत ही सिंपल पॉइंट है, मैं आपको 1 मिनट में बता दूंगा, ओके, ठीक है। और प्राइवेट ऑडिट आपको ये सब जो है ना, ये चीजें ऐसी, ये सब नहीं भी लिखे तो चलता है, ओके, दीज थिंग्स ये नहीं भी लिखे तो चलता है, दैट्स ओके, ओके, इवन इफ यू डोंट राइट दैट्स फाइन। सो प्राइवेट ऑडिट डिस्क्रिशनरी फॉर द मैनेजमेंट, ठीक है, इट्स वॉलंटरी, राइट, यू कैन डू इट, इफ यू डोंट वांट डोंट डू इट। डिस्क्रिशनरी, दिस इज मैंडेटरी, ओके। सेकंड थिंग में, okay, why do you do this voluntary audit? To check your internal controls, to check on employees that they should also know that audit is going on, ठीक है, and checking financial non-financial operations, just it's a check generally, okay। And statutory audit we know, true and fair view, that's all, ठीक है, okay, दो point easily, okay। And then approach is here propriety oriented approach, ठीक है। So here basically you have to see that everything is okay, morally correct, no fraud, all those things, that's called proprietary oriented approach. Here is compliance oriented approach, so just see whether it is complying the law or not, ठीक है। So ये चीजें हैं, okay। And then next is scope will be decided by the management, correct, scope will be decided by the management, and here scope will be prescribed by law, ठीक है। इतना तो शॉर्ट इवन यू राइट मोर देन इनफ, 4 पॉइंट होगा, राइट। लास्ट पॉइंट इज 4 पॉइंट्स आर ओवर, देन रिपोर्ट, ठीक है। रिपोर्ट इज टू बी गिवन टू मैनेजमेंट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, ठीक है। मैनेजमेंट हैज अपॉइंटेड हिम, विल गिव इट टू द मैनेजमेंट, ठीक है। देयर इज नो स्पेसिफिक फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट, ओके, फ्री फॉर्म। एंड हियर रिपोर्ट इज टू बी गिवन टू शेयर होल्डर्स, ठीक है। रिपोर्ट इज टू बी गिवन टू शेयर होल्डर्स विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम,
and format is prescribed by law. ठीक है, for company audit, Companies Act will prescribe the has prescribed the format. Okay, you have to follow that. बस खत्म, जितना ही, कुछ भी नहीं. Okay, यार प्राइवेट ऑडिट एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट, इसका डिफरेंस बस ऐसी ये मैं बोल रहा हूँ. मेरे साथ साथ आपको whatever videos I'm going to post today, you have got 3 days. In 3 days you complete it. Okay, it's my responsibility to complete your course. Don't worry about that. अब से going forward, first of all those first 8 lectures एक बार देख लेना अच्छे से. Whatever I am giving from today onwards, 3 days you go on completing. Yeah, within a good time before your exams. ठीक है, at least 5 days before your exams, your entire audit will be completed nicely. ठीक है, so बस मेरे साथ साथ चलो आप लोग. Okay, just be with me. So चलो, there's one more. This thing will complete difference between, and we'll close this lecture here. ठीक है, and then I'll continue with another lecture. So this is difference between statutory and government audit. Now यहाँ पे जो है, it is little close, statutory and government audit, you know, है ना, थोड़ा closeness है. Okay, but there are definitely differences. So क्या क्या लिखना है आपको? Statutory audit is applicable to all private companies, ठीक है, all cooperative societies, ठीक है, and all proprietorship and partnership companies. If they exceed a specific threshold limit, they have to do tax audit. Okay, so tax audit is applicable to proprietor and partnership firm. Okay, otherwise all private companies, all cooperative societies have to do statutory audit. Okay, okay, so even here they're saying private or private and public companies, you can write like that. Okay, यहाँ पे here government audit is done by government departments, ठीक है, statutory corporations and government companies. ठीक है, both देखो, statutory corporations and government companies both are controlled fully by the government. Okay, government has a majority shareholding. ठीक है, in government companies they have got 51%. In statutory corporations they have got 51% or more, much more, many times. ठीक है, only difference is statutory corporation is formed by an act. Government companies are not formed by an act for the purpose. ठीक है, it is just a company in which government has majority shareholding, okay, over 51% shareholding, and it controls it. ठीक है, so but generally speaking क्या है, वो ये दोनों काम तो एक ही तरीके से होता है यार. Okay, practically they are the same. Practically, because both are fully controlled by the government, they work as per the government. Okay, चलो, so ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो है प्लस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स. ओके, व्हाटएवर डिपार्टमेंट्स आर डायरेक्टली सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स. ठीक है, ये क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेबल टू प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप इफ टैक्स ऑडिट इज रिक्वायर्ड. ठीक है, तो ये आप सेक्शन नहीं भी लिखे चलेगा. ओके, इवन इफ यू डोंट राइट द सेक्शन, दैट इज फाइन. ठीक है, चलो ये, एंड हियर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनीज, डन. ओके, ओके, हु विल अपॉइंट इट? प्राइवेट कंपनीज शेयरहोल्डर्स. ओके, whoever is the owner they will appoint. ठीक है, जस्ट जिसकी जो व्हाट whoever is owner they will appoint. अच्छा, यहाँ पे इन केस ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्टी और मैनेजमेंट कमेटी, ये क्वेश्चन जो है ना, ये आता है. दिस क्वेश्चन कम्स इन योर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लॉट, दिस वन. ठीक है, who will appoint स्टैट्यूटरी ऑडिटर फॉर अ ट्रस्ट. सो यार आपको ट्रस्टी नहीं देंगे तो समझ में आ जाएगा ना, जैसे गिव ट्रस्टी यू विल नो. सो इन द ऑप्शंस वन विल बी मैनेजिंग कमिटी and the right answer is managing committee. Okay, so in the case of cooperative societies, also managing committee with prior approval of the registrar. ठीक है, managing committee इसमें जो है, in cooperative society, remember this is also managing committee, but it needs prior approval of the registrar for cooperative societies. ठीक है, okay. So यहाँ पे who is the appointing authority? Government पे we know Comptroller and Auditor General, CAG. ठीक है, CAG is the appointing authority. For statutory corporations, because okay, these are created under acts, right? So you have to follow the provisions of special statutes. Whatever that act says, you have to follow that. ठीक है, and for government company, ठीक है, so company law board is no longer there, it is the tribunal now. Okay, government company
ओके, इट इज अ ट्रिब्यूनल ऑन द एडवाइस ऑफ सीएजी। ठीक है, यहाँ पे जैसे लिखा है आप उसी को फॉलो करो। ठीक है, बट कंपनी लॉ बोर्ड इज नो लॉन्गर देयर। ठीक है, इट वाज द प्रीवियस अथॉरिटी। ठीक है, नाउ इट इज द कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ओके, सो ऑन द एडवाइस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, बस ये है, ये हो गया इसका अपॉइंटिंग अथॉरिटी। ठीक है, एंड हियर नेक्स्ट इज रिपोर्ट, इसमें इज टू बी सबमिटेड टू ओनर्स शेयर होल्डर्स, वी नो दिस, यहाँ पे है ना। और and here it is to be submitted to shareholders because these companies also have shareholders, and copy is to be given to CAG. ठीक है, a report to owner shareholders, या report to shareholders, copy to CAG, खत्म। ओके, यहाँ पे बस इतना ही आपको क्या देखना है, एप्लीकेबिलिटी। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी में स्टैट्यूटरी ऑडिट इज डन फॉर ऑल प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज आप बोल सकते हो। ठीक है, ऑल कोऑपरेटिव सोसाइटीज and proprietorship and partnership if tax audit is required. ठीक है, ऐसा लिखना है। ओके, tax audit is needed only beyond a certain threshold. Okay, so we have this in direct taxation, correct? so यहाँ पे for government audit it is applicable to government departments, statutory corporations, government companies. ठीक है, applicability is clear, बहुत simple है, one point is over. Okay, और सेकंड पॉइंट, लास्ट पॉइंट तो बहुत ही सिंपल है, सबमिशन ऑफ रिपोर्ट ओनर्स शेयर होल्डर्स हियर, एंड हियर इट इज टू शेयर होल्डर्स एंड कॉपी टू सीएजी। ओके, 1 and 3 आर ओवर, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी में यहाँ पे क्या रहेगा, फॉर कंपनी सोल प्रोप्राइटर्स पार्टनरशिप द ओनर्स विल अपॉइंट। ठीक है, तो पार्टनरशिप, ओनर्स ऑफ पार्टनरशिप आर पार्टनर्स। ठीक है, सोल प्रोप्राइटर ओनर इज प्रोप्राइटर, company owner is shareholders. ठीक है, just remember for trust it is trustee or managing committee, and cooperative society is managing committee with approval of registrar. ठीक है, ये है appointing authority. Here is in the first case government department CAG, and for statutory corporations, okay, this is CAG for government departments, and for statutory corporations, ठीक है, because statutory corporations are formed under an act, right? So as per that act. ठीक है, and in case of for government company, ठीक है, company law board on the advice of CAG. ठीक है, so company law board is tribunal now. ठीक है, तो ठीक है, तो इस तरह से ये है, तो हो गया, बस ये हो गया हमारा क्वेश्चन रेडी। ठीक है, जस्ट बेस्ड ऑन दिस यू कैन इजीली राइट, इजंट इट, है ना, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड नहीं लिखे तो चलता है, नो प्रॉब्लम। ओके, एक ओवरऑल इफ यू आर एबल टू राइट इट यू विल गेट मार्क्स। ओके, ठीक है, तो चलो ठीक है, नेक्स्ट में एक छोटा सा है इंडिपेंडेंट ऑडिट। ठीक है, अगर इसका देखिए इतना ही दिया है हार्डली, अगर कुछ 2 मार्क का क्वेश्चन आ गया तो हम इसको देख लेते हैं। ओके, व्हाट इज इंडिपेंडेंट ऑडिट, देन आई विल, ये इंटरनल ऑडिट हम विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, so what is independent financial audit? देखो, जो all statutory audits are independent audits only. ठीक है, independent audit का मतलब ये है कि only meaning is the auditor is not dependent on the management, he can give an independent view, that is independent audit. ठीक है, so one main part of independent audit is statutory audit, ठीक है, which is required by statute. But if entity wants to do an independent audit which is not required by statute, then it becomes an independent financial audit. ठीक है, to be conducted by a qualified auditor at the request of a client. Client can be any of these clients. ठीक है, कोई भी हो सकता है, anyone can ask for independent financial audit. Only thing is like the auditor will not be in their control, he will give a independent opinion. ठीक है, again इसमें objective is true and fair view, कुछ भी नहीं। okay, objective is true and fair view. ठीक है, it may be compulsory under some acts, if it is compulsory you will call it statutory audit. okay, ऐसा होगा। So basically in independent financial audit you can draw 2 parts. One is compulsory under some acts, that will become statutory audit. Second one is not compulsory, that will be called as independent financial audit. okay, ठीक है, ये है आपका इंडिपेंडेंट ऑडिट। ये अगर एक 2 मार्क्स का कुछ आ ही गया तो यानी बहुत ही बढ़िया है, नथिंग यू हैव टू राइट, कुछ लिखना ही नहीं हमको इसमें, बट जस्ट से दैट इसमें कंडक्टेड बाय क्वालिफाइड ऑडिटर एट द रिक्वेस्ट ऑफ अ क्लाइंट। ओके, इट कैन बी एनी, कोई 4-5 डिफरेंट एंटिटीज के नाम डाल देना, यू कैन पुट द नेम ऑफ कंपनी आल्सो, नो प्रॉब्लम,
एनीवन कैन डू दिस, ठीक है। और बस जस्ट राइट इफ इट इज कंपल्सरी अंडर एनी एक्ट देन इट इज कॉल्ड एज स्टैट्यूटरी ऑडिट, ठीक है। बस एंड पर्पस, पर्पस इंपॉर्टेंट है, ये भूलना नहीं, ओके। ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बस खत्म, ठीक है। तो 2-3 मार्क्स का अगर पूछ लिया तो अपना बोनस ही हो गया, ओके, देन इट इज बोनस फॉर अस। चलो ठीक है, सो यहाँ तक हमारा हो गया। बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए आप लोग, ठीक है। अच्छे से विल डू ऑडिट, बिल्कुल। और दिस ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CAAP, ठीक है। तो एट द सेम टाइम आई विल फाइंड सम टाइम, थोड़ा मुझे टाइम दीजिए, लेकिन करेंगे जरूर। डिबेंचर्स है, डिबेंचर्स इज पेंडिंग, आई नो, ठीक है। एनी वन डे आई एम गोइंग टू डेडिकेट फॉर डिबेंचर्स, ठीक है। गिव मी सम मोर टाइम, जस्ट अनदर 8 or 10 days, आई एम जस्ट कंप्लीटिंग सर्टेन थिंग्स। जैसे कुछ चीजें हो गए, तो आफ्टर आफ्टर 12th थोड़ा मेरे को थोड़ा आई विल हैव सम ब्रीदिंग स्पेस, ठीक है। वहां से वट एवर इज रिमेनिंग वो सब पार्ट हम अच्छे से कर लेंगे। जस्ट बी विथ मी, वो करते रहो। इस तरह से हम करेंगे that it will be very easy for you to do, okay। Debentures definitely will do, okay, don't worry। चलो, so we'll continue with from internal audit now, ठीक है। चलो, okay।